राजकुमार युधिष्ठिर ने किया था। So Yudhishthira was worse. अपनी पत्नी को दांव पर लगाया था। Yeah. Você fez a escolha, agora aguenta a consequência. Mentiu na minha cara, perdeu toda a confiança. Vai, me traz, vai lá e vai me daquela. Vai, me traz, vai lá e vai me traindo. Cê vai me traz, vai lá e vai me trair. Vai me. Oh, finally meet as well. The first time they met. Catching his tears like how Arjuna was catching, Kunti's tears. That brought me back. Yep. The exact same thing he did with Kunti. Exact same thing. It was when the 12 years passed when they were training with Dronacharya, and Kunti was happy to see her sons again after the training, and he caught a tear. परंतु तुम्हारा मुख देखे बिना मेरी आंखों का जल सूख गया था। जन्म से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था पिताश्री। सदैव आपके साथ रहकर आपकी सेवा करूंगा मैं। अवश्य पुत्र, Since birth. साथ ले जाने ही तो आया हूँ मैं। माता कहती हैं मोर के अंडे श्वेत या पीले ही होते हैं, तो फिर भी मोर का बाल सभी रंग लेकर जन्मता है। आपका पुत्र हूँ। Yeah. आप ही की कला लेकर जन्मा हूँ। The apple doesn't fall far from the tree, basically. पिताश्री दिन में 3 बार स्मरण दिलाते हैं कि मारना सीखो। तुम्हारे पिता के शत्रुओं को मारने में ही तुम्हारा धर्म है। और माता दिन में 3 बार कहती हैं कि मरना सीखो। भीष्म माता के अपमान का प्रतिशोध लेते हुए मरने में ही तुम्हारा धर्म है। मैं जानता था कि तुम्हारे मामा श्री बुद्धिमान है और तुम्हारी माता मूर्ख है। He's such a fool. तुम्हारा तो जन्म ही अमर होने के लिए हुआ है। कहाँ है तुम्हारी माता और मामा श्री कहाँ है? माता अपने कक्ष में है। ताज श्री दुर्योधन पधारे हैं। He's getting beaten up like a pinata. Don't worry, Arjuna. Yeah, kiss my feet. क्षमा कर दीजिए मुझे। Shakun's training is paying off right now. The tears of the sea. मेरा मन भटक रहा है। Don't let his tears drop on your foot. Boy, your foot's gonna get tainted. Swipe your foot away. Man, get off my foot. दिखाई देते हैं मुझे गुरुदेव। अब कोई आनंद नहीं है मेरे लिए। Stomp on his head. अंत कर दीजिए गुरुदेव, अंत कर दीजिए मेरा गुरुदेव। विलाप करना आपको शोभा नहीं देता। Sees right through his deceit. Get up. रात्रि के अंधकार से भी अधिक भय लगता है मेरे सम्मान को, मेरे स्वप्नों को, मेरे जीवन को ग्रहण लगा है गुरुदेव। He's in the perfect position to get strangled to death. I'm just saying. मुझे मृत्यु से भी अधिक पीड़ा प्राप्त हो रही है। वो पांडव मेरे जीवन के सारे सुखों को निगल गए गुरुदेव। ऐसा क्या किया है पांडु पुत्रों ने? उन्हें तो वनवास मिला था, और दूसरी ओर तुम जिसने अपना समस्त जीवन राजभवन में व्यतीत किया है। Bang on point, Borum. Bang on. वनवास गुरुदेव, उन्हें वनवास मिला, वो क्या मेरा दोष था? You invited them. मेरे पिता के साम्राज्य पर मेरा अधिकार नहीं है। क्यों मेरे पिता अपना सिंहासन मुझे नहीं दे सकते? कैसा न्याय है इस आर्यवर्त का? पांडवों ने मेरे राज्य का भाग किया। जिस कन्या से मेरा विवाह होने वाला था, Drupadi. उस कन्या का अपहरण किया उन पांडवों ने। Krishna. सारा आर्यवर्त हंसा मुझ पर गुरुदेव, सारा आर्यवर्त हंसा मुझ पर। You dropped into the pool by yourself. गुरुदेव, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, किंतु ये पांडु के पुत्र जीवन भर किस प्रकार मेरा अपमान करते आए हैं। अभी ये पांडव सारे आर्यवर्त को एकत्र कर रहे हैं मेरे विरुद्ध। Man, you're the devil. मुझसे युद्ध करने के लिए। क्या दोष है मेरा? क्या अपराध है मेरा गुरुदेव? भरी सभा में किसी स्त्री का वस्त्र हरण करना क्या आपके लिए अपराध नहीं है भ्राता दुर्योधन? Exactly. Especially in the court of Hastinapur as well. भरी सभा में कोई दासी
अपने स्वामी का अपमान करे तो उसे दंड देना अपराध किस प्रकार माना जा सकता है वासुदेव? यदि दंड अति कठोर प्रतीत हो रहा है, प्रायश्चित कर लूंगा मैं। Shakuni's proud. Shakuni's proud right प्रायश्चित now. कर लूंगा गुरुदेव। यदि युद्ध हुआ तो मुझे भी उसका प्रतिकार करना ही होगा। वंश की सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। केवल आप ही हैं जो इस युद्ध को रोक सकते हैं। मैं भला क्या कर सकता हूँ युवराज दुर्योधन? End him right now. Drop the hammer. यादव ही उन पांडवों का बल है गुरुदेव बलराम। यदि आप उनके साथ नहीं होंगे तो वो पांडव युद्ध करने का विचार भी नहीं कर सकते। आपकी इच्छा क्या है भ्राता दुर्योधन? क्या करना चाहिए हमें? This is when Shakuni steps in. हम तो केवल विनती कर रहे हैं कि आप दोनों किसी की ओर पक्षपात नहीं करेंगे। उसकी चिंता आप ना करें गांधार राज। युवराज दुर्योधन यथार्थ कह रहे हैं। Absolutely right. Oh no. खेल के परिणाम युद्ध का कारण नहीं बन सकते, इसलिए मैं आज ये वचन देता हूँ That he won't take कि part. मैं कृष्ण एवं यादव सेना का कोई भी सैनिक पांडु पुत्रों की ओर से शस्त्र नहीं उठाएगा। आप धन्य हैं महाबली श्री बलराम। Look at his face change suddenly. Arjuna witnessed it. Oh no, Arjuna witnessed all. Shakuni was shook. हमारा पक्ष सुने बगैर आपने हमें दोषी कैसे मान लिया? मैं यहाँ किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा, मैं तो केवल परिस्थिति के यथार्थ को समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरे समक्ष परिस्थिति यह है कि दो पक्षों ने परस्पर खेलने का निर्णय लिया, जिसमें आपके पक्ष की पराजय हुई। The losing side. Wow. प्रतिशोध स्वरूप आप विश्व युद्ध आरंभ नहीं कर सकते, हमारे साथ छल हुआ था ज्येष्ठ भ्राताश्री। तो आपको खेल छोड़कर उठ जाना चाहिए था। Man, this is Shakuni we're talking about. वचन से बंधे हुए यदि आप सारी स्थिति जानेंगे तभी सब कुछ स्पष्ट होगा। Man. Go overstep Arjun. This bore him. इस परिस्थिति से जुड़े किसी भी सत्य से मैं अनभिज्ञ नहीं हूँ। उस सभा की चर्चा होती रही है, इसलिए मुझे आपसे या किसी अन्य से आरंभ से ही मेरा हृदय केवल एक सत्य को मानता है कि उस युद्ध सभा में युवराज दुर्योधन से अधिक अधर्म राजकुमार युधिष्ठिर ने किया था। So Yudhishthira was worse. अपनी पत्नी को दांव पर लगाया था, Yeah. अपने भाइयों को दांव पर लगाया था। वह होता है सबसे बड़ा अधर्म। इतने पर भी राजकुमार युधिष्ठिर युद्ध क्रीड़ा छोड़कर उठे नहीं थे। Exactly. जब उनसे यह प्रश्न पूछा गया कि क्या अपने भाइयों को दांव पर लगाने के अपने निर्णय पर उन्हें गर्व है, Oh my gosh. तब वे उठ सकते थे, परंतु राजकुमार युधिष्ठिर ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें अपने धर्म पर अहंकार था। He said it right. He said it और right. जब व्यक्ति को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है राजकुमार अर्जुन, He's absolutely right. इसलिए युवराज दुर्योधन को दिया गया मेरा वचन मुझे उचित प्रतीत होता है। And that dice game still bites us until this day. आप ज्येष्ठ भ्राताश्री को हमारा पक्ष समझाने का प्रयत्न कीजिए ना। Nah, it's already been set in stone. मैं उन्हें क्या समझाऊं पार्थ? उनका कहना उचित ही है। Bang on point. That's a, oh, अब मैं भी दाव के निर्णय से बंधा हूं पार्थ। that's exactly right. हम अब पांडवों की ओर से शस्त्र नहीं उठा पाएंगे। Giving him a way out. Arjuna does not want this at all, including Pandavas, especially Beam. Beam is not going to accept this whatsoever. He might kill Dorna right hand here. Beam is definitely not going to accept this. Go and gain what they wanted as well. Dorna made Shakuni proud right there. What is going on? क्या हो रहा है ये सब? महाबली बलराम, हमने अब तुझ पर सिर्फ मेरा अधिकार है। मैं अपने पति और परिवार को छोड़कर किसी दूसरे के घर नहीं जाऊंगी। हाँ, यही दाव लगा था इस खेल में। यदि मैंने इसे गिरा दिया, Gambling. अरे हटो, That man went flying. करो ये खेल। Exactly. It's spreading everywhere. खेल में यदि कुछ दांव पे लगा ना हो तो खेल का आनंद ही क्या।
This is spreading everywhere. आपको यहाँ राजा जैसा सम्मान मिलता है। क्या अनर्गल प्रलाप कर रहे हो? आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? इस पर अब जीतने वाले का अधिकार है। Borum is good, man. I wish he would have done this to Dorna. I wish he would have, man. This guy overstepped. स्त्री का अपमान और अब मुझे चुनौती। The ball. नहीं बल है तो पहले जाकर कौरवों और पांडवों से प्रश्न पूछो। Man, this is why I love Borum, bro. This is why he's in my top 3. छोड़ दीजिए साहब, प्रजा मंडल और मंत्रिमंडल से इस विषय में बात करें। Man. This is what would have happened in the court. और यदि इन्हें स्पर्श करने का तो उसे मैं स्वयं दंड दूंगा। Man, this gambling is spreading everywhere. मेरी ज्येष्ठ माता के अपमान का प्रश्न हो तो धर्म अधर्म का विचार ही कहाँ से आता है? ये निर्णय तुम्हारे पिताश्री ने नहीं लिया है और ना ही भ्राताश्री कृष्ण ने। भ्राताश्री की किसी भी बात में कभी एक अर्थ नहीं होता। आप भूल गए कि उनका नाम रणछोड़ है। कभी कभी अपने शत्रु को पराजित करने के लिए, उन्हें विजय प्राप्त करने के लिए शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है। Come that character. Yeah, finally realizing this episode makes me want to watch a Krishna and Borum TV show. I really do want to watch a TV show or a TV series or TV serial, if you guys want to say, about, you know, Krishna and Borum. Let him cook. When we saw Borum's wrath, this is why he's in my top 3, because Borum is one of those characters that don't mess around, like Pasharama. Someone cooked here. I really do want to see more of Borum, like I keep on saying. How long I've been waiting for this? This disease, right, this infection, this virus is literally spreading. The gambling, betting, and this unrighteousness, even betting on his wife as well. I'm just like, How dare you? when is this going to end? Like, this all started, right, the seed was planted within Hastinapur, within the court, between Yudhishthira and, you know, Dorna, playing against each other, with Shakyamuni rolling. And to be honest with you, I really hated how they possibly skipped some events that happened leading up to the event that we saw in this episode with Borum struggling the hell out of that guy. Which I wish he would have done to Dorna. I wish I would have saw more of that spreading along across the region. I really wanted to see why Krishna and Arjuna talking some more about the events, you know, that took place before the 12 to 15, 13 years, a bit more, because we didn't really see their aftermath talk that much, because we saw them leaving, you know, their kingdom because they were exiled, but we didn't really see them talking that much because Krishna was angry because of what happened to Draupadi. But I wish I would have gotten more Krishna and Arjuna talk between them, possibly in the next episode, because Arjuna now realized from his wife, Krishna doesn't really need to, you know, take up arms to, you know, win this war. He can, you know, be the charioteer like he was actually during the, what was it, Kurukshetra war. Borum was going to, you know, delay the punishment. Because I know he was going to delay it. I know he was not going to punish Dorna. I know those two snakes, Shakyamuni and Dorna. And let me just say, Dorna, he's getting good at this. I'm not going to lie. I'm going to give him some credit. He's getting good at those deceitful tears that Shakyamuni has been practicing within him throughout all these years. He can't keep getting away with it. He's getting good. Even though he didn't welcome Borum, right? Even though Borum told the truth and he was actually right. Even Krishna had to say to Arjuna that, you know, his brother Borum was correct on this decision. Even I have to say he was correct, because Yudhishthira's, you know, arrogance would literally lead up to the events. He could have backed out of the game. And he betted on his wife as well. Yudhishthira's proud, arrogant side of, you know, himself, probably the bad side of Yudhishthira, they literally took over in that game, and it literally caused their demise. Deep down, knowing that's his star pupil, and knowing that I don't know how they were going to do it. I don't know how they were going to spin it around, but I knew that they were going to spin it around in some way. I really did like this episode. I really did like it because I get to see more of the relationship between Dorna and Borum. I'm wondering, when is Borum going to train Beam? He's out of line, but he's right. That's what I'm wondering before etc. I really want to see how or when Borum's going to take up arms. Maybe Krishna's going to say that it wouldn't be fair for him to train Dorna and not to train Beam, where if they, you know, meet in the war that's about to come. That doesn't seem fair. I really want to see how they, you know, deliver, you know, Borum teaching or confronting Beam, you know, because I feel like that's gonna be funny. I have a sense that Borum does not like Beam for some reason. I'm not sure. When I was watching that Kurukshetra series on Netflix, I got the sense of Borum
not having some sense of goodwill to Beam. I don't know why, but I soon see the reason why within the series. She figured out a way for Krishna to take part and to assist the Pandavas. But like I said in the beginning of this review, I really want to see Krishna and Boram, series. I know that it's a bit too late, and I know that it's not going to happen, but I'm really disappointed not getting these two, the same actors from this series, to play Boram and Krishna. I really wish that they would have had their own White series. Things happen, I guess, but yeah, that's the episode. I really did like this episode more than the last episode, I should say, and get to see Arjuna seeing his son and talking to his son, and when his son caught his tear, just like how Arjuna caught his mother's tear when he came back from the 12-year training from Dronacharya, and they were displaying the skills in front of everyone. So that's the episode, guys. I hope you guys like, share, subscribe, you guys. And if you guys like these reactions I'm doing for, Mahabharata, you obviously can like Marvel. So yeah, go check them out. Without the way, thank you guys for watching, and peace. Until next time.